Good morning, team. Zinc came with the results. So their revenue was slightly down for the quarter, and it was up for the year. For the year, full year, it was higher by 16%. For the quarter, it was down by 3%. Profit after tax for Q4 FY23 was 2,583 crores, and the full year it was 10,511 crores. And very important is the cash level has depleted because they paid huge dividend to the government and to the promoter Vedanta Limited or to the public in large. So that has depleted their cash portion. So we need to be slightly careful here. Gujarat Industrial Power Corporation GIPCL has approved procurement of imported coal for 500 megawatt of Surat lignite power plant, and one more also they are doing renewable energy park, which will have 2,375 megawatt capacity at Kutch, Gujarat. Gujarat Pipavav Port has approved capex at $90 million for setting up a new liquid berth at Pipavav Port. PNC Infra, construction of 4-lane highway in UP for 819 crore. The company has got a letter of allotment for HAM project. 24 months is the construction period, 15 years will be the operation period. So JSW Energy commissioning of 51 megawatt under phased commissioning of 450 megawatt wind power project. So they, out of 450, phasely they are doing it. Now it is 51 megawatt, is commissioned. Total it is around 80 megawatt. And the total capacity of JSW Energy is 6,615 megawatt. And this unit, previous unit has come in Tamil Nadu. And work in progress or under construction, it is 2,855 megawatt. We like JSW Energy for a long-term perspective, but Tata Power, NTPC are better companies. Even Torrent valuation-wise is very attractive for investors looking at 2 to 3 years time frame. Loda developers came with results. So Q4 FY23, the revenue was down by 6.1% at 3,271 crores. Profit after tax was higher by 38% at 746 crores. EPS for that quarter was 15. For FY23, the revenue was flat at 9,611. Profit after tax was down by 60% at 489. There were few adjustments. I tried to find out. It was almost 1,172 crores was the adjustment. So I didn't understand it. So I've left it off. But Loda is not our preferred stock in real estate. We like Oberoi Real Estate, Godrej Property, DLF, Kolte Patel, Ashiana Housing. So these are better placed in this thing. Even if you want, you can look at Prestige Industries. Jyoti Lab has opened a new detergent manufacturing unit in the company's existing manufacturing unit situated at Pithampur, Dar district in Madhya Pradesh. Sri Cement completion of capacity upgradation of cement plant of company in Jharkhand. It has increased the capacity by 0.5 million ton per annum. So the total capacity is 46.9 million ton. Yes Bank came with the results. So Yes Bank revenue was higher by 15.7%. We call it as net interest income, 2,105 crores. Profit after tax was higher by 14.8% at 202 crores. NIM was at 2.8, very low level, but there are chances of improvement. Cost to income ratio is 72.1%. This remains elevated. Cost to income ratio should be lower than 50%. Then the quality of the business is very good. So the deposit has increased by 10%. Which is 2,17,000. Their advances increased by 12% at 2,03,000 crores. So they have added 82 new branches. So their total is 1,192 branches, but not a great result. And with
Yes Bank having almost 50 lakh shareholders, I don't think any major move up or down will happen in the stock. Hirabana has received a 6 CIB registration. The company will launch 5 new products out of the existing Sarigram technical unit. So this is positive for Hirabana. The valuation is looking very attractive. And Hirabana, Hiramba exports to China, and with China opening up, I think the negativity is over in the stock. NHPC current capacity is 7,000 megawatt. It is planning to add 6,500 megawatt of hydro capacity by FY26. So the revenue also will double over a period of time, and the profit also will double. So we like the stock for a long-term investor. There is a negative news for Sun Pharma. US FDA had directed the company to take corrective action at Mohali facility before releasing further products, product batches into US. So that there will be a temporary pause from Mohali manufacturing unit for US. Negative there. Map My India came with the results. Okay results, but the stock is very expensive. Ajmera Reality has a bought land at measuring 5,017 square meters from Tata Communication for 76 crore. There is an agreement for it. Fully it is not paid. And Ajmera Reality is saying they will use this plot now for an estimated value of 550 crores for 1 BHK, 2 BHK and 3 BHK. So this is it from me. Over to you, Hitendra. Yeah, thank you, sir. Good morning, everyone. I'm कॉल में एक बार हिंदी में कर लेते स्टार्ट करते हैं हिंदुस्तान जिंक के रिजल्ट के साथ नतीजे देखे गए तो क्वार्टर पे रेवेन्यू डाउन था 3%, बट ईयर ऑन ईयर पे देखा था 16% का जंप था। पैट देखा जाए तो 42,583 करोड़ सॉरी 583 करोड़ के आसपास था ईयर ऑन ईयर, और देखा जाए तो 10,511 करोड़ का था। और कैश डिपॉजिट देखा जाए तो कंपनी का डिप्लीट हो रहा है क्योंकि इन्होंने साल देखा जाए तो बहुत ही हैवी डिविडेंड दिया है जो कि गवर्नमेंट को भी दिया है और प्लस वेदांता इनकी जो पेरेंट कंपनी उनको भी दिया और प्लस इन्वेस्टर्स एट लार्ज के लिए थोड़ा सा ये चिंताजनक सिचुएशन रह सकती है क्योंकि कैश उनकी डिप्लीट हो रही है। सेकेंड GIPCL ने कहा कि वो इंपोर्ट कर रहे थे 500 मेगाटन का लिग्नाइट पावर कोर और ये रिपार्ट करेंगे 2375 मेगावाट के लिए जो कि कश्मीर में होगा। GIPPL भी गुजरात पेपावर पोर्ट ने कहा कि वो 90 मिलियन रुपीस का कीपेक्स करेंगे पेपावर पोर्ट में जिसमें वो लिक्विड बर्थ इंस्टॉल करेंगे। PNC इंफ्रा ने 4 लेन का हाईवे यूपी में स्टार्ट करें, उनको LOA मिल चुका है, हैम प्रोजेक्ट रहेगा 15 इयर्स ऑपरेशन के लिए। JSW एनर्जी ने कहा कि उन्होंने 51 मेगावाट का फेज स्टार्ट किया है जिसमें फेज एनर्जी स्टार्ट किया है पावर हाइड्रो पावर के लिए, उसमें 450 मेगावाट का विंड रहेगा और 80 मेगावाट टोटल नेट रहेगा। ये सॉरी हाइड्रो नहीं विंड पावर एनर्जी का है। टोटल JSW एनर्जी का अगर देखा जाए तो 6,615 करोड़ का मेगावाट का है जो कि तमिलनाडु में ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं और वर्किंग प्रोग्रेस देखा जाए तो 2,855 मेगावाट का है। एनर्जी स्टॉक्स में देखा जाए तो JSW एनर्जी भी हमें अच्छा लग रहा है, बट इससे बेटर में अगर देखना है तो NTPC टाटा पावर रहेगा। टोरेंट पावर भी वैल्यूएशन वाइज हमें थोड़ा डिसेंट लग रहा है। लोड़ा के नतीजे आ गए, अगर नतीजे देखे जाए तो इनलाइन नहीं थे। Q4 का रेवेन्यू देखा जाए तो 6% डाउन था जो कि 3,271 करोड़ का है। पैट देखा जाए तो 38% हायर था जो कि 746 के आसपास का है। EPS 15 रुपीज का दिया गया। FY23 में भी देखा गया तो रेवेन्यू फॉल ही हुआ है, रेवेन्यू 9611 का है, पैट 60% फॉल हुआ 49 है। इसमें एक एडजस्टमेंट था 1172 करोड़ का जो हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आया इसलिए हमने उसे छोड़ दिया गया है। सो ओवरऑल हमें लोड़ा पसंद नहीं है, बट अगर हमें स्पेस में रहना है तो ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, कोर्टे, पाटिल, आशियाना हाउसिंग, प्रेस्टीज एस्टेट जैसे स्टॉक्स पर फोकस कर सकते हैं और इसमें आप री एंट्री कर सकते हैं करना चाहते हैं। ज्योति लैब्स ने कहा कि उन्होंने एक न्यू डिटर्जेंट फैसिलिटी लॉन्च की है पीतमपुर MP में। श्री सिमर ने कहा कि कंपनी ने अपना एक्सपेंशन खत्म कर दिया है और उनका केपेक्स जो कैपेसिटी 0.5 मिलियन टन से बढ़ा दिया है, टोटल 46.9 मिलियन टन के आसपास है। इस बैंक के भी नतीजा है, रेवेन्यू देखा जाए तो नीचे था 15.7% का रेवेन्यू ऊपर था 15% जो 2105 है। पैट देखा जाए तो 202 करोड़ के आसपास का पैट है। निम देखा जाए तो 2.8% का। कॉस्ट इनकम रेशियो अभी भी इनकी हाईएस्ट है। डिपॉजिट ग्रोथ देखा जाए तो 10% ऊपर है जो कि 2.17 लाख करोड़ का है। और एडवर्टाइजमेंट और एडवांसेस देखा जाए तो 12% है जो कि 2.03 लाख करोड़ का है। इन्होंने नए 82 ब्रांचेस ओपन किए, तो टोटल नेट आउटस्टैंडिंग ब्रांचेस जो कि 1192 है।
एनएचपीसी ने कहा कि उन्होंने एक 7,000 मेगावाट और प्लस 6,000 मेगावाट का हाइड्रो कैपेसिटी इंस्टॉल कर दिया FY26 में। उसको इनका जो हमें लगता है यहाँ से जो इनका फैट है वो यहाँ से डबल हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसमें बाय इसमें अपनी पोजीशन ऐड कर सकते हैं। सनफार्मा के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है, यूएसएफडी ने एक वार्निंग इशू किया जो उनकी मोहाली फैसिलिटी और वहाँ से जो डिस्पैचर डिलीवरी स्टॉप कर दिया गया है, तो ओवरऑल की सेंटीमेंट नेगेटिव रहेगी। महात्मा इंडिया के भी नतीजे देखेंगे, नतीजे ओके से रिजल्ट ठीक ठाक थे, बट वैल्यूएशन वाइज अभी भी बहुत रिच है और एक्सपेंसिव स्टॉक में आता है। अजमेरा रियल्टी ने एक लैंड पार्सल बाय किया है 5017 स्क्वायर मीटर का, जो कि टाटा ग्रुप से लिया है 17 करोड़ का कॉस्ट में। और प्लॉट देखा जाए तो एस्टिमेटेड 550 करोड़ का वहाँ से सेल्स होगा, जो कि 123 BHK सेल करेंगे। अब आते हैं आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे देखें तो नतीजे बेहद अच्छे थे, इंप्रूवमेंट हुआ नॉन जो कि 25 बेसिस के आसपास हो गया, 4.9% जो कि रीप्राइसिंग बनता है। एसेट क्वालिटी देखा जाए तो ग्रॉस एनपीए में भी गिरावट देखी, जो कि 3% से गिर के अभी 2.8 में आ गई है, और स्लिपेजेस भी कम थे। रिस्ट्रक्चर एसेट्स में भी थोड़ी सी गिरावट देखी, जो 0.5 से गिर के 0.4। क्रेडिट को थोड़ी सी डिक्लाइन हुई 19 से भी, और कंपनी को लग रहा है क्रेडिट को थोड़ी सी डिक्लाइन आ गई रहती हुई दिख सकती है। 14 से 15% के आसपास हमें लगता है आईबीसी की ग्रोथ रहेगी। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी 30% के आसपास रहेगी और स्ट्रॉन्ग एनआई ग्रोथ रहेगी। तो हमने करेंटली वैल्यूएशन के साथ जो हमारा पैरेंटिंग बिजनेस को 1210 के प्राइस टारगेट के साथ उसको रिव्यू किया। एचडीएफसी बैंक ने भी कहा कि उनकी जो सबसे पहले उन्होंने जो अपडेट दी है, सेकेंडली आरबीआई का जो रिस्पॉन्स आया गया, आरबीआई ने कहा कि पीएसए प्रायोरिटी पीएसए लेंडिंग जो कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसमें उन्होंने उसको रिलैक्सेशन दिया 3 ईयर्स के लिए, जो कि 2-2 लाख करोड़ हर साल के हिसाब से रहेगा। सेकेंडली बट आरबीआई ने इसके ऊपर साफ मना कर दिया कि एसएलआर सीआरआर और एलसीआर वो मर्जर के साथ ही उन्हें वो इश्यूज को मेंटेन रखना पड़ेगा। बट एचडीएफसी बैंक में वो ऑलरेडी उसमें उन्होंने क्वेश्चन रखा हुआ है, ऑलरेडी उनका एसएलआर देखा जाए 23-24% के आसपास का है। सो वो उनके उन्होंने इस मद्देनजर रखते हुए इसमें ध्यान रखा गया है। तो हमें लगता है ये मर्जर इजीली आगे हो सकता है, और जो उनकी एसएलआर रिक्वायरमेंट है वो इजीली मेंटेन कर पाएंगे। तो 2070 के पैसा के साथ में एचडीएफसी बैंक पॉसिबल। सेकेंडली सीमेंट स्पेस में देखा जाए तो हमारी इंट्रैक्शन हो रही है डीलर्स के साथ। सीमेंट में देखा जाए एवरेज 2% का प्राइस हाइक हुआ था मंथ ऑन मंथ पे, और ये डिक्लाइन के बाद देखा जाए तो सिस्टम हमें रीजन में देखा तो वेस्ट में 6% का था, फॉलोइंग साउथ में देखा 3% का था। बट अगर हम देखें डिक्लाइनिंग 3 मंथ से एनर्जी प्राइसेस थोड़ी स्टेबल रह चुकी है, और इम्पोर्टेड कोल प्राइसेस भी देखा जाए तो $144 पर टन के आसपास से है, जो कि लास्ट ईयर में भी सेम अप्रैल 23 में 133 के आसपास का है। विप्रो ने कहा कि वो एक बायबैक करना चाहते हैं, और उसके वो कंसिडर करेंगे 27 अप्रैल को। बायबैक अगर हम देख रहे तो 8 से 10 हज़ार करोड़ के रेंज में रहेगा, जो कि 4 से 5% रहेगा इनके मार्केट का। लास्ट ईयर का बायबैक भी देगा 9,500 करोड़ के आसपास का था, 400 शेयर का था। तो मुझे लगता है ये प्रोवाइड करेगा सपोर्ट स्टॉक को अगले 6 महीने थोड़े से अनसर्टेन टाइम में। इंडियन होटल्स ने कहा कि वे एक अनाउंस कर रहे हैं साइनिंग ऑफ 2 न्यू होटल, जो कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, जो कि वेदांता और जिंजर ब्रांड होटल्स में, जो कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट रहेगी। वेदांता के पास 100 और रूम की इन्वेंट्री रहेगी, और जिंजर में देखा जाए तो 120 की रहेगी। टोटल होटल एक्सपेक्टेड है 2027 में ओपन होने का। ये वेदांता जगह 19 होटल है टास्क सिलेक्शन, और वेदांता अक्रॉस उत्तर प्रदेश में 9 अंडर डेवलपमेंट है। सो ये इनलाइन मैनेजमेंट की जो स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है इन्वेंट्री एडिशन के साथ, और मैनेजमेंट की जो कॉन्ट्रैक्ट्स है गोइंग फॉरवर्ड है। सो हमें भी लगता है हॉस्पिटल स्पेस में हमें अभी भी पॉजिटिव हम प्रदेश में जो बाई टारगेट है 371 के। सोलार इंडस्ट्रीज ने कहा कि जो मैसेज इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जो होली ओन सब्सिडरी है सोलर ने, उन्होंने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट एमओडी के साथ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, जो कि डिलीवरी करेंगे लॉटरिंग एम्यूनेशन। लॉटरिंग एम्यूनेशन एक टाइप ऑफ ड्रोन है जो कि डिजाइन किया गया है होवर होने के लिए लॉटर और एक एरिया एस्टिमेट क्लियर में, जबकि उसका टारगेट नहीं मिलता है। एक बार टारगेट फाउंड हो गया तो वो जाते हैं सीधा वो टारगेट को एक्सप्लोर करेगा, एक टाइप ऑफ मसाइल बन जाता है, जो कि करंटली ड्रोन। तो लॉटरिंग वेपन जो है जो कि क्रिएट किया गया है एक इंडियन कंपनी के नाम से। कॉन्ट्रैक्ट देखा जाए 212 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि एक साल का चलेगा, और 6% की कंपनी की रेवेन्यू के आसपास किया जाए। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है स्टॉक के। लास्ट न्यूज़ हमें ऑर्गेनाइज किया, हमें ऑर्गेनाइज एक्वायर करना चाहिए पार्टनरशिप, जो कि बाबा फंड कैंडल पार्टनर ऑफर कंसल्टेशन देखा जाए तो 68 करोड़ का सब्जेक्ट टू एडजस्ट एज मे बी क्लोजिंग स्टेज में। अगर पार्टनर देखा जाए तो बीएफसी नेशनल ऐसे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे बोर्ड पे रहने के लिए, मार्केट डेवलपमेंट भी करेंगे बीएफसी के लिए। तो इस कंडीशन में वैल्यूएशन देखा जाए तो 4x के आसपास है, एडजस्टेड एबिटा के आसपास है, और जो परसेंट कंडीशन जो है अमाउंट कॉम्बिनेशन का कैश और इश्यूएंस ऑफ सिक्योरिटीज को एग्जिस्टिंग प्रेफरेंशियल बेसिस करें। जो एक्विजिशन है वो इनलाइन है, हमें ऑर्गेनिक की स्ट्रेटजी को एक्सपांड करना चाहती है, स्पेशली केमिकल डिविजन्स में, जो कि डिविजन्स में और नीश प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चर करना चाहती है, एडवांस टेक्नोलॉजी और कंपटीशन को लो और एंट्री बैरियर्स हाई रखना चाहती है।
the derivative and technical update. On technical front, last entire week index traded in a narrow range with a negative bias and managed to hold 17,500 levels. So basically the 200 SMA levels have provided a support for the Nifty for the last entire week. If you see on Friday's session, the index experienced a selling pressure in the first half, but they managed to rebound from the lower levels in the last hour and close on a flat note. If the Nifty crosses a level above 17,800 levels, then the outlook would be positive. Till then, Nifty traded in a range, and support for the Nifty are 17,200 levels and resistance levels are 18,200 levels. On the Bank Nifty front, index has a witness of falling trendline breakout, which was at 13th April close. In the last week, if you see index witness a breather for that breakout level, and if the Bank Nifty crosses level above 42,500 levels, then the outlook would be positive. Till then, Bank Nifty traded in a range. So 41,000 to 43,000 should be a broader range for the index. We can use a buy on decline strategy for this week. On the derivative front, Nifty future witnessed a long build up to the tune of around 0.47%. Addition of 42,000 shares. PCR recover from 0.87 to 0.93. Maximum OI seen at 17,700 levels and 18,000 call option. While on the put option front, 17,600 and 17,500 put option see a maximum OI. Bank Nifty 2 witnessed a long unwinding to the tune of minus 0.54%, a decline of around 16,000 shares. PCR declined from 0.93 to 0.87 levels. Maximum OI seen at 42,500 and 42,300 call option. While on the put option front, 42,000 and 42,300 witness a maximum OI. On the FII front, FII added a longs of around 2,325 and net short by minus 31,517. So ratio is around 39%. On the cash option front, FII sold 2,116.76 crore and DI bought 1,632.66 crore. So on the stocks are looking good in that segment is Alchemy is looking good, Page Industry, Pidilite, Bata, and Navin Fluorine. So that's it from my end. Now I will hand over to Vishal sir for research update. Thank you and over to you, sir. Yeah, good morning, team. Good morning, sir. To start off with the note that we have published, first is on ICICI Bank, where we have positive view, and the company has reported a pretty good set of results. NIMS, there is an improvement by 25 basis point on a quarter-quarter basis, and asset quality has also improved with GNPA of 2.8, which was around roughly like 3.10 on a quarter three. This is primarily led by lower slippages. And credit growth, if you look at it, was at around 19%, which was 20% in quarter three. So overall, not a major dip, we'll say that. Bank has also, if you look at from NII growth point of view, then it is like 30% on Y&Y basis. So overall, I think pretty positive set of result, and we maintain our buy rating on the stock with a target price of 1,210 on ICICI Bank. Next is on HDFC Bank, where there was a company earning call, as well as there was the update from the company, which was highlighting what has been the RBI response on the relaxation of certain regulatory requirement vis-a-vis the mergers of HDFC Bank and HDFC Limited. In this, if you look at, there has been hits and misses. So a positive side is HDFC Bank has been granted certain set of relaxation relating to the priority sector lending, as well as investment made by HDFC Limited and certain associate. But if you look at in terms of relaxation of maintaining the requirement of SLR, CRR, and LCR, that relaxation has not been given by RBI. Going forward, we believe that the bank shall be in position to maintain its requirement from effective date. It has been already carrying excess SLR for the regulatory requirement. So we have a positive view and buy rating on the HDFC Bank with the target price of 2070. Next, we have released our monthly update on cement. Though in terms of our stock recommendation, if you look at the stock is trading closer to our target price and more
commentary or probably more trajectory in terms of how exactly the stock movement and the cement sector will go. So companies will be hosting their result and con calls. Will update more. But if you look at in terms of our daily interaction, there has been a cement price hike in the month of April. So that is positive. And there has been a lower energy prices. So again, what we understand is this will have a positive bearing in terms of improvement in EBITDA per ton and EBITDA margin for the company in the fourth quarter number when they report in this particular week, and as well as in quarter one. So that is a positive on cement. And next is on Wipro on a positive side. So company is considering a buyback on the 27th of April. We believe that the buyback will be in the range of 8,000 to 10,000 odd crore, which is roughly 4 to 5% of the market cap. Last buyback was of size was around 9,500 crore, the price of 400. And this buyback would provide a support to the stock price in the next 6 months, given there is a overall uncertainty in the IT sector as a whole. Next is on Indian Hotel on the positive side. The company has announced the signing of 2 new hotels in Ayodhya, Uttar Pradesh, both Vivanta and Ginger brand hotels. The other Greenfield hotel. Vivanta will have 100 room inventory, while Ginger will have 120 odd keys. We have a positive view on hospitality as a space and in Indian Hotel. We have a buy rating with a target price of 371. This is, I think, overall management guidance has been pretty strong in the inventory addition, and this is what company is going ahead with. That's the Indian Hotel. Next thing from my side is on solar industry. So on a positive side, company has signed a contract with Ministry of Defense for the delivery for loitering ammunition. So basically, if you look at this particular ammunition is used in the type of drone that is designed to hover over an area for an extended period of time until the target is identified. When the target is found, the drone can be directed to fly into the target and explode. So if you look at the contract value for solar is around 212 odd crores for a 1 year delivery, which is roughly 6 to 7% of the company's F 2012-22 revenue. So this is positive for the stock. Last thing from my side is on ME Organics. So company has acquired a 55% partnership interest in Baba Fine Chemical from 2 of its partner for the consideration of 68 crore. So if you look at this company is into the business of specialty. Basically, this Baba Fine is particularly into the business of semiconductor, and this bodes well and probably provide an entry of ME Organics into this business. Now, semiconductor as an industry, if you look at not only auto, there is a requirement, but when as the world is moving toward chat GPT and the data the sources like that, so what will happen is they have to do a more grinding of the data in order to come out with a final outcome. So that time again, semiconductor requirement will be pretty huge, and that bodes well for ME Organic, this particular in terms of making an entry into a semiconductor and plus capturing the market share and going ahead in whenever the transformation to the chat GPT sort of technology comes into place. So that's all from my side, and I'll hand it to the team now. Over to you. Good morning, everyone. So few more news updates. So there was a data from the World Bank Logistic Performance Index. So it says that India has now climbed at 6th place on the World Bank Logistic Index. So now India is ranking at 38 from the 139 countries index. So earlier it was 44 in 2018. So that performance has been increasing. Next is on Gujarat Industries Power. The company has approved the procurement of imported coal for 500 megawatts, which is at Surat lignite power plant. The approval has also given for the deliberation of EPC contract for pooling substation 2 of solar, wind, and hybrid park of 2375 megawatt capacity at Great Run of Kutch, Gujarat. Next is on Sri Digvijay Cement. The company has received environmental clearance for expanding cement plant capacity by 150% from 1.2 to 3 MTPA, and clinker plant capacity by 100% from 1.1 to 2.221
MTPA, which is, it looks like a positive. Next is on Maharashtra Seamless. The company has received an order of rupees 262 crores from ONGC for supply of seamless tubing pipe and accessory across 5 states. Next is on HDFC Bank and Axis Bank. They have entered into a they have executed an agreement to invest up to rupees 69.9 crores each in Go Digital Life Insurance in 2 tranches for a stake of 9.94% in Go Digital Life. Next is on Goldstone Technology Limited and e-mobility. This Contron AG has has entered into JV to build a digital platform offering sustainability services. And lastly, this Kotak Bank, the shareholders approved the appointment of Uday Kotak as a non-executive, non-independent director for the private sector lender. So 99% of the shareholders voted in favor of resolution to appoint Kotak as a non-executive director. Uday Kotak, current term as MD and CEO of Kotak Mahindra Bank, is set to end in December 2023.